Hello, sir. Yes, sir. Okay. So I will start in another 1 or 2 minutes. Okay. Sure, sir. Sure. Yes. Okay. So good afternoon, everyone. Myself, Dr. Nitin Verma. Good afternoon, sir. Welcome, sir. Good afternoon. So I am presently in Chitkara University, Himachal Pradesh. Have you heard about the Chitkara University? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So you all are the research scholars, PhD research scholar. Yes, sir. Yes, Great. sir. So you are registered in pharmacy department. Okay. Yes, sir. Different branches, sir. Pharmaceutics, pharmacology, and chemistry. Okay, great, great. So just brief introduction so that I must understand your background. So it would be easier for me. So could you please give your brief introduction? Yeah, Yes, sir. Palvi. Yeah, we can start from you, Palvi. Sir, I am Pallavi from Kanpur, Mm-hmm. and I did my B Form and M Form from Radhabad. Mm-hmm. IFT. IFTM? Yes, Okay, IFT. okay, okay, okay. And presently I in PhD research scholar in PhD University. And my specialization is pharmaceutics. I'm from in pharmaceutics. Pharmaceutics, okay. And Palvi, uh, you complete your B Form and M Form from Radhabad, okay? Hello? Yes, hello. I'm audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you getting the scholarship or some fellowship there? So presently, sir, ki sir in B Form M Form. No, no, in PhD, in PhD. No, sir. अभी तो presently sir कोई scholarship नहीं. Okay, and this is full-time program? Yes, sir. Okay, okay, good. Shweta, what about you? Good afternoon, sir. My name is Shweta Rai. I have completed my B Farm from Sagar and M Farm from Indore, Madhya Pradesh. And Okay, my specialization is pharmaceutical chemistry. okay. So you belong to which place, Shweta? Sir, I belong from Uttar Pradesh, but my father is working in Madhya Pradesh, so I was studied there. Okay, Uttar Pradesh, which state? Like which city? Sir, my hometown is Gazipur, but nowadays my current home is in Varanasi. Oh, Varanasi, great. I'm also from Varanasi. Okay, great. Okay. And what about you, Prinka? Prinka, hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, Prinka. Sir, myself Priyanka Mishra, and sir, I did my M Farm and B Farm from CSGM University. Sir, and I complete my M Farm from Pharmaceutics branch, Mm-hmm. and sir, I basically belong from Kanpur.
Kanpur. So you completed your B Farm and M Farm from CSGM. Yes, Kanpur University. Huh? Sir, both. The Kanpur University. Sir, Kan- CSGM University. CSGM University. Great. Yes, sir. Okay, Priyanka. And you are in pharmaceutics. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Okay. Anshuman? Thank you, sir. Yeah. Good afternoon, sir. Good Myself, afternoon. Anshuman Prajapati. I have completed my B Farm from Meerut, Uttar Pradesh, Meerut and mein I which have college? completed my Am M I? Farm from Okay. no, sir, from Bagpat, Sri Gopichand College of Pharmacy, Okay, okay. Great, great. Okay. and I And have completed my M Farm from Indore. Indore? Yes, sir. Which From university? Sri Aurobindo Institute of Pharmacy. University is Rajiv Gandhi Pradhyogiki Vishwavidyalaya, Okay, okay. And you belong to which place? RGP Bhopal. Okay. You I belong belong to to Kanpur, sir. कानपुर Kanpur. ओके सो आप बागपत कैसे गए बी फॉर्म करने बिकॉज आई बिलोंग्स टू मेरठ सर एक्चुअली वो उस टाइम पे यूपी2 का ही एग्जाम होता था, तो उसके बेसिस पे ओके अलाउड हुआ था कॉलेज. ओके ओके ग्रेट ग्रेट इज वेरी ओल्ड कॉलेज बागपत में या है या सो या या बेसिकली आई एम फ्रॉम मतलब लाइक मेरे एंसेस्टर सारे बनारस में हैं बट मैं मेरठ में ही मतलब मेरठ से ही मैं पला बड़ा हूँ मेरठ से ही मैंने ओके, बी ग्रेट फॉर्म सर, करी अपनी ओके ग्रेट. ग्रेट सो नाइस टू सी यू गाइस अच्छा लगा आप लोगों से बात सेम ईयर, करके मुझे सेम ईयर. और मैं डॉक्टर नितिन वर्मा माय स्पेशलाइजेशन इज pharmacognosy natural products and from last 5 to 6 years I'm also working in toxicology so my area of specialization is in risk assessment एक नया फील्ड है ये थोड़ा सा अभी इंडिया में धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रहा है I did my postdoc. I did my PhD from BHU, Banaras Hindu University, and after that, I did my postdoc from US. So today, I will, discuss about in vitro toxicity studies or cell line toxicity studies. I have given two assignment. Just give me 1 minute only. So, Excuse me, sir. yes, yes, please. Sorry for the interruption. Sir, Mhm. my name is Nupur Verma, and sir, due to some network issue, not able to connect, so Okay, I am with Pallavi. I'm okay, sharing mobile with Pallavi. okay. Your good name? Sir, my name is Nupur Verma. Mukul. Nupur, Nupur. Okay, N-O-O-P-U-R. okay, okay, Nupur. Okay, please, Nupur. Sir, my name is Nupur Verma, and my B Form is from Kanpur University, and Mhm. M Form from Babu Banarsidas, Lucknow, Okay, okay, good. and Uh, I belong to Kanpur. you belong to which place? Sir, Kanpur, same. कानपुर कानपुर ओके गुड सो Thank आप you, sir. सभी किसी को भी फेलोशिप नहीं मिल रही है आप सभी मतलब विदाउट फेलोशिप पीएचडी कर रहे हो Yes, sir. ओके ओके गुड एंड दिस इज रेगुलर प्रोग्राम ओके मतलब लाइक आप Yes, sir. ओके ओके ग्रेट सो Thank you, sir. I'm just opening the email. So मुझे ना दो assignment मिले हैं एक मेरे को आपको पढ़ाना है cell line toxicity studies and second I will discuss about the principles and application of different extraction technique supercritical fluid extraction microwave assist extraction and enzyme assist extraction process. So today I will discuss about the cell line toxicity studies. So I'm just sharing my presentation. So my screen is visible. Yes, sir. Yes, ओके 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 सो मैंने ना थोड़ा सा टॉपिक को ऐसे कर दिया एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर्स और एनिमल सेल लाइन फॉर इन विट्रो टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स and we also do testing of toxicities of the environmental pollutants and cell cultures. ओके सो जो ये सेल लाइन हम लोग यूज करते हैं इसको यूजुअली हम लोग बोलते हैं in vitro method of testing. So why number one why there is need of in vitro method of testing या in vitro method of toxicity.
So there are two methods: in vitro method and in vivo method. In vivo method, when we do in animals or in living cells or living cell organisms, like today we are using zebrafish model. Also, we use small animals, and we use large animals. So there are you can say a wide you can say classifications of the animals where we test our drugs, our chemical or any environmental pollutant. But there are certain issues related with these animal testing. So number one is the ethical issue. Ethical issue means, like, whenever we are going to test any compound, any chemical in animals, we have to first take the approval from certain agencies, which is very nowadays, which is very difficult. Okay, you have to give proper justification, explanation, and in different countries these guidelines are maintained by the different agencies. So whereas in vitro test whereas in this in vitro testing or in cell line testing, there is no need of taking any approval. Okay, you just have the cell lines, you have to continue your work. Number one, this is what the advantage I am talking about, or why we use this in vitro testing or cell line culture or cell line toxicity studies. Number one, this. Number two is cost. So once we do the testing on the animals, lots of cost involved, because you require an animal house. For that you require lots of maintenance required, expert persons required for handling. Okay, so this involve a very huge cost. To overcome this, we have just come with a idea, or come with a solution, like why not we do the in vitro testing methods or in vitro cell lines method. Okay, this is one important and again consideration, that we focus on in vitro testing or in vitro test lines. And third one is, nowadays, with the advancement in the technologies, once you do the testing on the animals, there is, you can say, lots of time also consumed, because you give the dosing to the animals. Okay, after that you do lots of analysis which take up a time, you can say very it depend upon your protocol, whether it is of 2 week protocol, 3 week protocol, 1 month protocol, or it may be long term studies, 2 month, 3 month. But once we do this in cell lines or in vitro, we can substantially decrease the time. So you have a question like, sir, why we can't, we have to reduce the times in terms of this, the same, you can say, the analysis you can do in number of plates at a you can say the same time period and simultaneously. So there are techniques which is known as high throughput screening. So how throughput screening is a method where we do the analysis in large, you can say, uh, uh, plates at the same time, and it reduce the cost and time both. So there are certain advantages of doing this in vitro testing methods, and the results are equally good whether you do in vivo method or animals method or in vitro method, because once we use any in vitro method, we have to validate those methods, and the results are equally good, equally you can say statistically significant as compared to with the animals model or in vivo model. The another most important consideration is the quantity of the compound. So once you are going to analyze in the in vivo or in animals, you require a large quantity. You require, because you have to give a dose, or not only one group, there are different groups. But once you have a very limited, you can say, the quantity of the compound or very small quantity of the compound, so in vitro methods are the best method and best option. So there are certain advantages of this in vitro testing method, but being you can say, or despite of different advantages of these in vitro method, these method cannot replace the in vivo method. Okay, in some cases we have to be check the efficacy, or you can say the toxicity, in vivo only. So it is depend upon for what you are using it, what is your concern, okay, of testing those chemicals or those compounds. So I hope you have understand what is cell culture. Cell culture is a type of in vitro testing of drugs or chemicals, or it is an in vitro method, and you now understand what is in vitro in vivo method, and how these in vitro methods are advantages, what are the various advantages, or why these in vitro methods are developed, or nowadays they are using.
for the toxicity studies. Okay, so in vitro testing of drugs, in vitro testing, toxicity testing is a scientific analysis of the effects of the toxic chemical substance on cultured bacteria or the mammalian cells. In vitro is testing methods are employed primarily to identify the potentially hazard chemicals. Okay, so whenever you are going to launch any new compound, any new chemical, whether it is used for human being or it is used for animals or veterinary product, or it may be used for agrochemical pesticide, whatsoever it may be, that new compound, we have to check whether it is hazardous or not. Hazardous means whether it produce certain type of cancers or not, whether it is toxic or not. So initially we have to do this in vitro testing method, and to confirm the lack of certain toxic properties in the early stage of the development of potentially useful new substance. Okay, so such as therapeutic drugs, agriculture chemicals, and food additives. So this given you can say some idea about the toxicity or about the usefulness of this compound. If initially it is a toxic, then there is no need of go further, or no need of going for testing in vivo or testing in animals. But yes, if it has been safe, or if shows the good results in vivo method, then we can plan for vivo testing or in vivo analysis. So in vitro toxicity testing method can be more useful and cost effective in the toxicological studies and in living animals, which are termed in vivo or in the live methods that I've already discussed with you, that these are the more cost effective, time effective, when you have less quantity of the compound, and when you want to get more data, more results in less duration of time. Because there are certain time periods to launch certain compounds, to getting license of those compound into the market. So time is very important for the you can say innovators, or any pharmaceutical company, or any you can say drug making company. So they want to test lots of chemicals in a less time period. For that, in vitro method give a good results. So in vitro method for the assessment of journal cellular toxicity. Okay, so how we do these in vitro toxicity studies or in vitro cell line toxicity studies? So the cell culture can be used to screen both toxicities, for toxicities both by estimation of basal functions of the cell, that is those process common to all type of cells, by test or specialized cell function. Okay, आप ऐसे मान के चलो कि आपने कोई कल्चर में सेल ग्रो करा, ओके, और अगर आपका कंपाउंड टॉक्सिक नहीं है तो उसकी वो ग्रोथ में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा. बट इफ योर कंपाउंड इज टॉक्सिक, और इफ इट इज हैजार्डस, इट लीड टू सम यू कैन से डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ द सेल. वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे हम लोग चेक करते हैं, क्या मेथड्स हैं, कौन कौन से सेल फंक्शंस हैं. ठीक है, सो इस तरीके से हम बड़े इजीली, और जिसे कहते हैं बहुत ही कन्वीनियंट वे में, बिना बिना किसी उसके हम लोग बड़े आराम से उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भी ये कंपाउंड जो है ये टॉक्सिक है या नहीं है. So for general toxicity studies, the more commonly used cell lines includes the diploid human fibroblast lines, और जिसको हम लोग बोलते हैं WI38, and tumor cell lines or HeLa cell lines. These are the very common cell lines which is available in the market, and we do usually these toxicity studies or cell line toxicity studies in those cell lines. So the first and most readily observed effect of any toxicant is the morphological alteration in the cell layer or cell shape in a monolayer culture. Okay, so हमने culture किया, and it's a monolayer culture. Monolayer culture means there is only one layer of the cells. अभी मैं आपको बताऊंगा, there is 3D culture also. Okay, so in 3D culture or in 2D culture, so there is monolayer culture, 2D culture, and 3D culture. So आप मान के चलिए कि कोई organ का development है, so this is development only through the cells. So when this is one layer cells, we tell about this monolayer culture. और जब वो पूरा एक ऑर्गन फॉर्मेशन हो रही है उस पर, तो वहां पे 2D कल्चर भी बनेगा और 3D कल्चर भी बनेगा. सो इनिशियली, बट उसके लिए क्या है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, आपको अलग अलग कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती हैं, आपको अलग अलग मीडिया में न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं, अलग अलग मीडिया का you can say pH. There are so many things we have to take care of that. Then only you can culture organ also. You can do the cell culture, you can do the tissue culture, and you can do the organ culture. Everything is possible nowadays. But yes, initially we do this monolayer culture, and
the very, you can say, in the first instance, the observed effect is the morphological alteration in this cell layer and cell shape. So the cytotoxic concentrations of chemical determined in vitro have been shown to correlate well with lethal dose in laboratory animal and man for a range of selected drugs and chemicals. Okay, so once we see the toxicity, so we do the lot, we use the lots of concentration, different concentration of those chemicals. So for example, in one concentration we have not found any effect, in other concentration we don't found any effect, in other concentration we also don't found any effect. So हम क्या करते हैं, concentration धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं, ठीक है, और सॉरी कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं और उसको डाइल्यूशन उसका कम करते चले जाते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाते हैं. सो हम देखते हैं कि किस कंसंट्रेशन पे इफेक्ट्स आने शुरू हो रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कोरिलेट दोस कंसंट्रेशंस विद द लेबोरेटरी एनिमल. एंड once we find these toxicities in the laboratory animal by calculating the LD50, lethal dose 50, we can also find out the these you can say doses in the mans, or you can say in humans. So the morphological changes in the cell exposed to the chemicals like bulbing, suggesting injury of the cell membrane, or vacuolization हो सकता है cell के अंदर, ठीक है, which can be very easily observed by light or electron microscopy and also been demonstrated basic cytotoxicity studies. So there are certain, you can say, observations like bulbing and vacuolization. Okay, सो उसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि जो सेल की मॉर्फोलॉजी वो चेंज हो रही है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी नहीं है सेल की, ठीक है ना. आप ही देखिए, अगर कहीं आपको बॉडी में कोई आपको लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम आई है, तो वी जस्ट सी द मॉर्फोलॉजी, है ना, कहीं स्वेलिंग है, कहीं रेडनेस है, कहीं सेल का साइज छोटा हो गया, सेल का साइज बड़ा हो गया, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज समथिंग प्रॉब्लम or some toxicities is there, or some you can say problem is there. So accordingly, we see the cells, and we use usually the microscopes, electron microscopes, and by which we can very easily find out. So these observations may provide the valuable information about the pathological process that occur as a consequences of the exposure of a chemical substances. So once it has been there there is a toxicity, so we can find out these consequences of these exposures of the chemical substances. जैसे कि हो कहाँ पे रहे हैं सारे ये चेंजेस, किस किस प्रोसेस में हो रहे हैं. So endpoints of the assessment of general cellular toxicity. Okay, endpoints क्या होते हैं? Endpoints वो होते हैं कि जहां पर आप बहुत क्लियरली इंडिकेट कर पाएं कि हाँ अब तक ठीक है, नाउ द टॉक्सिसिटी स्टार्टेड, या जो हमें बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं ऐसे पॉइंट्स पर. मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए टाइट्रेशंस करी है ना, आप सभी ने कभी ना कभी टाइट्रेशंस करी होंगी, बी फॉर्म में, एम फॉर्म में टाइट्रेशंस करी होगी. तो देयर इज अ पॉइंट कम एंड पॉइंट where there is a change in the color, और जहाँ पर इट डिपेंड अपॉन द वेरियस टाइट्रीमेट्रिक मेथड, कहीं पे चेंज कलर होता है, ठीक है ना, डाई का, या कहीं पर आप देखते हो कि जो आप लोग यूज करते हो जैसे डाइआइजोटाइजेशन में यूज करते हो, ठीक है. सो वहां पर क्या है कि इट्स क्लियरली इंडिकेटेड दैट ऑल दी जो भी आपका कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज्ड विद one concentration is being neutralized with the another concentration. So this endpoint is a very clear cut indicator, ठीक है, कि यहाँ पर आप चेंजेस आ गए हैं. तो इसी तरीके से एंड पॉइंट्स होते हैं. हम एंड पॉइंट्स मतलब हम कैसे पता लगाएंगे क्या क्या हमारे लिए एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है, क्या क्या हमारे लिए ऑब्जर्वेशंस होंगी जो कि हमें सेलुलर टॉक्सिसिटी के बारे में बताएंगे कि सेल में टॉक्सिसिटी है या नहीं है. तो सबसे पहला मैंने आपको बताया, दिस इज सेल मॉर्फोलॉजी. वी कैन सी द सेल मॉर्फोलॉजी एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स लाइक इफ देयर इज वेल्बिंग, वेकुलाइजेशन है, फाइन अल्ट्रास्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस है सेल के अंदर. तो दिस इज अ वेरी गुड एंड पॉइंट टू सी दी or for the assessment of the cellular toxicity. Now there is cell viability. So there is a viability, means like there is a natural viability in the cells. So cell movements hote hain. Okay, so once there is an toxicity, the movements may be altered. So these movements can be very clearly seen using of certain indicators or dyes like trip and blue. Okay, it's enter the dead cells. So agar जितना ज्यादा ब्लू कलर आपको ऑब्जर्व होगा या फ्लोरोसेंस नजर आएगी, इसका मतलब डेड सेल्स ज्यादा हैं.
मतलब बिकॉज ऑफ दिस केमिकल टॉक्सिसिटी हुई, टॉक्सिसिटी से सेल डेड हो गई, और सेल होने से क्या हुआ, डेड होने से क्या हुआ, जो trypan blue color have, that is going to be entered in the dead cells. So the viability gives a very good information regarding the assessment of cellular toxicity. There are other you can say dyes or indicators like neutral red. It is actively taken up by the living cells. So जितनी ज्यादा लिविंग सेल्स होंगी, मान लीजिए आपका कंपाउंड है और वो टॉक्सिक है, अगर वो टॉक्सिक है तो इसका मतलब क्या होगा कि सेल आपकी डाइज होंगी, ओके ओके, या सेल की वाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो सेल की वाइबिलिटी कम हो जाएगी तो रेड कलर आपको कम दिखाई देगा। सो हम एक नॉर्मल कंट्रोल रखते हैं जहाँ पे हमने कंपाउंड नहीं डाला है, अपना टॉक्सिक कंपाउंड नहीं डाला है सेल लाइंस के अंदर, और एक में हम डालते हैं एंड वी बोथ सी, और हम लोग उसको रीड कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, हमारे पास बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिससे हमें पूरा आइडिया लगेगा। इवन यू गॉट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस आल्सो कि कितने टाइम में कितनी सेल्स डेड हो रही हैं, और वो एरिया वाइज बताता है हमें कि इसके पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितनी सेल्स और कितनी डाइज हो रही हैं। सो देयर इज अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बस देखने से नहीं कि भाई हाँ कम दिख रहा है, बट कितना कम दिख रहा है, कितनी सेल डाई हुई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट to assess the toxicity. So कम होना और कितना कम होने में बहुत बड़ा फर्क होता है, वो हमें चेक करना होता है। तो उसके लिए फिर हमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस करते हैं हम लोग। एंड देयर इज आल्सो CR51 रिलीज, दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर व्हेन देयर इज लिविंग सेल्स। इसी तरीके से वी कैन फाइंड आउट द सेल ग्रोथ, सो सेल काउंट, plating efficiency, DNA or protein content, glucose consumption, lactate production, NR test, MTT test, which is very commonly used. MTT test मैं बताऊंगा आगे अभी आपको, for to check the cellular toxicity. So there are certain subcellular structures. We are also giving a very good information regarding the assessment of the cellular toxicities. Now we also do the metabolic parameters like O2 consumption. Okay, कितना O2 consumption हुआ, ATP levels क्या है, pool of DNA and RNA precursors, NADH NAD conversions कितने हैं, ठीक है। सो अगर आपकी सेल वाइबल है, सेल आपकी एक्टिव है, सेल लाइव है, सो there is also already there is a formation of ATPs and ADPs. These are the energy, you can say, precursors or energy mediators, okay, which help the cells to live, to grow. So अगर आपका कंपाउंड टॉक्सिक है तो वो इनको कम कर देगा, ओके, इनके लेवल्स को कम कर देगा। So by checking their levels, we can also check the we can also assess the cellular toxicity. Okay, आ रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. गुड। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, यू कैन आस्क मी। वेरी जनरल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। आगे की स्लाइड्स विजिबल नहीं है। Okay, so now what are the specialized cells commonly used in the toxicology? So यहाँ पे हम कुछ, मैं आपको कुछ सेलुलर्स के नाम बता रहा हूँ कि हम जब भी हम लोग कोई भी सेलुलर टॉक्सिसिटी देखते हैं या डिफरेंट तरह की सेलुलर हम लोग जब एक, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी, आपको स्लाइड दिख रही है ना? हेलो, फर्स्ट जो सर इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है। हेलो, आगे की नहीं होगी फर्स्ट स्लाइड दिख रही है अभी आपको? सर। Yes, आपने sir. इतना कुछ पढ़ाया लाइट लेकिन मूव नहीं कर रही। ओके, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैंने तो काफी सारी स्लाइडें आगे करी, आपको बताना चाहिए था। अभी दिख रही है फर्स्ट स्लाइड? अब नो कुछ नहीं। सर प्रेजेंटेशन हट गया है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। अब दिख रही है? यस सर। अच्छा, चलिए सर। और अब मैं इसको ना प्रेजेंटेशन मोड में करता हूँ। अब दिख रही है? यस सर। अब सेकंड स्लाइड चेंज हो गई? Yes, sir.
अब चेंज हुई? वो सर चेंज नहीं हो रही है। चेंज हुई अब? टेस्टिंग सर सेकंड चेंज नहीं हो स्लाइड, रही है। सेकंड अब तो फिक्स है सर, वो फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकंड में इन विट्रो टेस्टिंग अब शुरू हो रही है सर। चलो हम इसको प्रेजेंटेशन मोड में नहीं करते, ऐसे ही कर लेते हैं। अभी ठीक है? अब दिख रहा है आपको? यस सर। सो मैं ये दिख रहा है स्पेशलाइज सेल आपको दिख रही है? कॉमनली यूज्ड इन सम ऑफ हाँ, टॉक्सिकोलॉजी। यस सर दिख रहा है सर। स्पेशलाइज सेल कॉमनली यूज्ड इन टॉक्सिकोलॉजी दिख रहा है? यस सर हेलो, दिख रहा है सर। ठीक है। सो दीज आर दी सेल्स which are used in toxicology. So अगर हम देखेंगे organ of origin, then there is primary culture और isolated cells, और cell lines को हम क्या बोलते हैं, इन cell lines को हम क्या कहते हैं. So अगर हमें कोई भी न्यूरोटॉक्सिसिटी देखनी है, ओके, या न्यूरोटॉक्सिसिटी स्टडी करनी है, so we always take a cells from the nervous system, and this is usually taken from the chick embryo ganglia और chick embryo brain cells, mouse और rat cerebellum cells. इनको हम लोग बोलते हैं C1300 माउस और C6 रैट. ये बहुत स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है, जबकि हम सेल को लेते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं और उसको कल्चर करते हैं. जब भी हम किसी एक सेल को लेते हैं, आइसोलेट करते हैं और उसको कल्चर करते हैं, सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज होता है प्योरिफिकेशन का. वो करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, इसलिए देयर आर सर्टेन कंपनीज जो बना बनाई सेल हमें दे देती हैं. हमें अगर हम बनाने लगे तो हमें बहुत सारी इसके लिए फैसिलिटीज चाहिए, मेथड चाहिए, हमें इसके लिए बहुत बड़ा एक सेटअप चाहिए. तो वो करना, वो कई लैब्स करती भी हैं, बट मोस्टली लैब्स क्या करती हैं, बनी बनाई ले लेती हैं. तो उनके कोड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी आवर लैब इज वर्किंग ऑन द न्यूरोटॉक्सिसिटी स्टडीज एंड वी वांट दिस माउस और रेट सेरिबियम सेल्स, सो वी से वी नीड C6 सेल्स. सो C6 सेल्स हमें मिल जाएगी बनी बनाई. दैट इज प्योर सेल्स, प्योर कल्चर सेल होगी. बस मुझे लाके उसको इनोकुलेट करना है और उसको मुझे क्या करना है, इंक्यूबेट करना है और उस सेल को मुझे ग्रो कराना है और अपने जो भी कंपाउंड है उसकी टॉक्सिसिटी टेस्ट कर लेनी है. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ये क्वेरीज होती है कि सर आखिर ये सेल लाइंस आती कहाँ से हैं, ये सेल लाइंस बनती कैसे हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ. इसी तरीके से इफ समवन इज टेकिंग अबाउट this lung toxicity, okay, और inhalational toxicity studies, so वहां पर हमारे पास सभी तरह के मॉडल अवेलेबल हैं where we can use human lung cells, rabbit and rat alveolar macrophages. So we isolated these human lung cells or rabbit or rat alveolar macrophages, we culture it, purified it and grow it. So the cell line's name is P388DI and A549 for humans. Okay. Now there is a reticoendothelial system, and where we use the human mouse lymphocytes and erythrocyte, rat and mouse peritoneal macrophages. This we can very easily isolate in our laboratory also. So these are not been commercialized, so that there is no coding or no name is available. Now, for liver or hepatotoxicity studies or liver toxicity studies, if you want to see the liver toxicity, or if you are predicting that your compound is toxic to liver or your compound may lead to the liver toxicity, so you have to take the rat or chick embryo hepatocytes, and their name is Chang for humans, CC1144 for rat, ARL for rat, and RLCGA for rats. Okay, so these are certain cell lines which is already been available, and we just culture these cell lines in our laboratory, and we test those animals and we test those chemicals and environmental pollutant or whatsoever you can say the compound drug you want to check the toxicity. Okay. अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताओगे आप सब लोग, आप लोगों ने सभी ने एमफॉर्म भी किया है, व्हाई टॉक्सिसिटी स्टडी नीड, हम टॉक्सिसिटी स्टडीज क्यों करते हैं? सर उसकी हार्मफुल कुछ. हाँ बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की. हेलो, कोई भी एक जना बता दे मुझे, व्हाई वी डू द टॉक्सिसिटी स्टडीज. तो कोई भी केमिकल ज्यादा से ज्यादा किस अमाउंट में यूज किया जा सकता है, उसके आगे के अमाउंट में वो टॉक्सिक होगा. दैट्स व्हाई वी वांट टू फाइंड आउट दैट कंसंट्रेशन. और कुछ? For dose specificity, acute toxicity studies are done.
And for the to determine the adverse effect of the drug. also concentration, Hmm. in which amount the drug is to be taken. गुड. सो देखिए, अगर कोई भी हमने कंपाउंड बनाया है ना, या हमने कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया, या कोई भी हमने नई ड्रग बनाई है, अगर वो ड्रग टॉक्सिक है, ठीक है ना, सो हम उसको क्लिनिकल ट्रायल पे नहीं ले जा सकते. ओके, हम उसको ह्यूमन पे नहीं देंगे. तो उसके लिए हमें वो है कि नहीं है, पहले तो हमें ये चेक करना है. अगर है तो कितनी टॉक्सिक है वो भी चेक करना है, ठीक है. तो उसके लिए हम लोग ये सारी टॉक्सिसिटी स्टडीज करते हैं. एंड वंस वी हैव दिस टॉक्सिसिटी डेटा विद अस, देन ओनली वी कैन गो फॉर आईएनडी और न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए, ये जो भी है. दिस इज द वन रीजन. अनदर रीजन इज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टॉक्सिक. आप किसी भी चीज की, इवन वाटर, अगर आप पानी भी बात करो तो वाटर इज ऑल्सो टॉक्सिक. नाउ अब आप बोलोगे सर हम तो रोज ही पानी पीते हैं, हम तो रोज बहुत सारा पानी पीते हैं. यस, यू आर यूजिंग वाटर डेली, वी आर यूजिंग वाटर डेली एंड गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर, बट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच मे लीड टू द टॉक्सिक इफेक्ट. सो कितना, that is a question mark for all of us. Okay, so everything is toxic, but in for some cases अगर आप बहुत थोड़ा सा लोगे तो भी टॉक्सिक होगा. इन सम केसेस थोड़ा ज्यादा ले लोगे, बहुत में अगर बहुत ज्यादा भी लोगे तो भी नहीं होगा. बट हाँ, अगर उससे बहुत ज्यादा ले लिया, आप समझने को तो सके कि क्या है, जहां पर जो डिग्री है या जो क्वांटम है ये वेरी कर रहा है, ठीक है. तो ये टॉक्सिसिटी स्टडीज हमें बताती हैं कि कितना, आखिर कितना हम लेंगे या कितने पे ये टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है. इससे पहले वो टॉक्सिक नहीं है, या इससे कम डोज पे या इतनी डोज पे वो टॉक्सिक नहीं है. जैसे ही आपने उसकी इतनी डोज बढ़ाई तब वो टॉक्सिक होगा. तो जस्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ओके, कि कितने डोज पे वो इफेक्टिव है, और उससे जैसे ही आपने ज्यादा लिया इट मे लीड टू द टॉक्सिसिटी. So endpoints more common used as marker of the toxic effect in specialized cells are the तो अभी तो मैंने आपको कुछ एंड पॉइंट्स बताए कि जो हम कॉमन यूज करते हैं असेसमेंट के लिए. अगर अब हमें मान लीजिए कोई भी सेल है जहाँ पे हमें उसकी स्पेशलाइज्ड फंक्शनिंग चेक करनी है, देखना है कि वो टॉक्सिक तो नहीं कर रहा है वो कंपाउंड, और हम देखते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर तो वो कुछ पैरामीटर्स हैं या कुछ एंड पॉइंट है उनके लिए. वो क्या क्या है, जैसे सिंथेसिस और रिलीज ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड सिंथेसिस एक्टिविटी और रिलीज ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम. अगर आपका कंपाउंड इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, सेल के अंदर जो ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इनकी सिंथेसिस को या इनकी रिलीज को अल्टर कर रहा है, ठीक है, अल्टर मतलब कम या ज्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपका टॉक्सिक कंपाउंड है. वो क्या हो सकता है, देयर इज कोलेजन मैट, heme formation, hemoglobin formation, albumin is a protein, urea, lipoprotein, bile salts, okay, metallothionein, glycosaminoglycans, proline, hydroxyproline, energy dependent choline accumulation and histamine release. अगर वो ये मीडिएटर्स, इस तरह के केमिकल्स जो हमारे सेल्स के अंदर हैं, अगर उनकी सिंथेसिस या उनकी रिलीज को वो अल्टर कर देता है कंपाउंड, तो इसका मतलब वो टॉक्सिक्स है. तो वहां पे तो हम सेल देख रहे थे, यहाँ पे हम अब जो सेल के अंदर जो ये कंपाउंड्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, अगर इनको करता है तो इसका मतलब कंपाउंड आपका टॉक्सिक है. एंड दीज आर द एंड पॉइंट्स, ओके, टू डिटरमाइन दी or to assess the cellular toxicity. Now, there are certain synthesis activities or release of specific enzymes. So these are the molecules and these are the enzymes like glucourinidase, lactate dehydrogenase, obane insensitive ATPase, glucose 6-phosphate dehydrogenase, glycogen phosphorylase, glutamic oxalizatic transaminase, glutamic pyruvic transaminase, acetylcholinesterase, and renin. So these are very important enzymes, and these systems are available in the cells. So once there is a toxicity, their synthesis or their activity or their release has been altered. So we check it. We have a method. We have a procedures. We have a इनको हम लोग बोलते हैं एस्से, सेल एस्से करते हैं हम लोग, सेल टॉक्सिसिटी एस्से करते हैं हम लोग, और जिनसे हम ये सारा का सारा कुछ पता लगा लेते हैं.
Now, interactions of the compound with cells. So phagocytosis has cytoplasmic inclusions, intracellular accumulation, uptake or bounding of compound to cytosol and lipoproteins or mitogenic responses. We also see these interactions of the compound with cell. अगर हमारा जो compound है वो और जो cell के साथ इस तरह के interactions में participate कर रहा है तो इसका मतलब compound आपका toxic है. Okay. Then there is alteration of metabolic pathways. So there are so many metabolic pathways going on in our cells, like methemoglobin reduction, glucose transport, 5-methyl tetrahydrofolate accumulation, hormone stimulate, glyconeogenesis, okay, lipid peroxidation, fat accumulation, and glucosamine and galactose incorporation. So अगर इस तरह के alterations हो रहे हैं metabolic pathway में cell के अंदर तो इसका मतलब compound आपका toxic है. Now, how we do the testing of the toxicity of this environment pollutant in cell culture? Okay, so the quality of material used, cell lines, media, and other reagent will affect the quality of the culture and subsequent scientific data and product derived from them. And the main area of the quality control that are of concern for tissue culture are the quality of reagent and material, the provenance and integrity of the cell lines, the avoidance of the microbial contamination. सो अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी के रिएजेंट है और मटेरियल है, हमारे पास जो सेल लाइन है वो प्योर सेल लाइन है, लिखा हुआ ना द प्रोवियंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल लाइंस. अगर वो प्योर सेल लाइंस हैं, अच्छी बनी हुई, बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो आगे डाइल्यूट होते होते देखा उनका सेलुलर वही चेंज हो गया, जेनेटिक सेलुलर जेनेटिक्स ही चेंज हो गई. अगर उनकी सेलुलर जेनेटिक्स चेंज हो जाएंगी या अगर उनमें म्यूटेशन या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, so we will not be able to predict the exact data, or we will not be able to predict the exact you can say results. So we have to be very careful that the integrity of the cell line should be maintained, and we always taking care of the microbial contamination. This is one of the biggest challenge during cell line culture or during cell line studies, because the media we are using is very you can say sensitive for the contamination by any of the microorganisms which in environment which is available in the environment, or which can transmit from you to the media or from your clothes to the media. So everything is done in very a very closed environment, very clean environment, and we also take care of the biosafety levels when we do these type of cellular toxicity studies or cell line studies. Now, how we do this testing? So cell viability and cytotoxic assay are used for drug screening and cytotoxicity test of the chemicals, and the in vitro testing evaluate the potential of material or their extract to cause damage to the cell in culture, useful in evaluating the toxicity or irritancy potential of material and chemicals. And cell cultures are suitable test system for the determination of cytotoxic reactions such as change in the cell cycle, inhibition of cell division, cell death, which is caused by elute or extract of the products, either natural or processed. Okay, these are the three important considerations for this cytotoxicity testing. So, cytotoxicity is evaluated by qualitative and quantitative means. मैंने बताया था ना आपको कि जब भी हम सेलुलर टॉक्सिसिटी करते हैं, वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ वेदर वी आर गोइंग फॉर द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. Yes, initially we do for qualitative, but qualitative cellular toxicity assessment will not give you the you can say much information, or you can say the better information, because based on the cellular toxicity study we have to take certain decision. हमें डिसीजन लेने होते हैं कि इस कंपाउंड को आगे हमें प्रोसेस करना है नहीं करना है, इसको क्लिनिकल सेटअप में लेके जाना है कि नहीं जाना है, रेगुलेटर्स को फाइल करना है कि नहीं करना है. और जो रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं, है ना, रेगुलेटरी बॉडीज तो आप लोग जानते होंगे क्या होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज. फार्मास्यूटिक्स वालों, आप लोगों ने तो डीआरए पढ़ा होगा, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स. हेलो हेलो. Yes, 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 sir. हाँ, तो रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती हैं? बहुत सारी है, यूएस एफडीए रेगुलेटरी बॉडी है, सब बहुत सारी. क्या होती है रेगुलेटरी बॉडी जैसे सर, और जो गवर्निंग बॉडीज है जो होती है वही हमारी
हाँ, वेरी गुड। तो जो आपके अभी देखो, आपको कुछ भी काम करना है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ना, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के, बिना अप्रूवल के तो आप कोई काम करोगे नहीं। हम कोई भी काम किसी भी सेटअप में अप्रूवल लेते हैं ना हम लोग। तो अगर आपको कोई भी ड्रग मार्केट में लानी है तो आपको तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रूवल जहाँ से लोग, इनको रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं, जो अप्रूवल देती है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है। इंडिया की कौन सी है रेगुलेटरी बॉडी? अगर आपको इंडिया में ड्रग का अप्रूवल लेना है तो रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? हम्म? इंडिया में अगर आप देखो, आपको आपकी कंट्री का ही नहीं पता। DCGI सर, नो DCGI, no, DCI is not the regulatory body. DCGI is the authority. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी है, वो कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अथॉरिटी है ये। हाँ, तो अथॉरिटी में और रेगुलेटरी बॉडी में फर्क होता है। सर आईपीसी गाजियाबाद? नो, IPC गाजियाबाद, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, is just mean to check the quality. ठीक है, एंड देयर मैंडेट इज टू, जितनी भी ड्रग मार्केट में आ रही है उनकी फार्माकोपिया डेवलप करना, उनके टेस्ट डेवलप करना, मेथड डेवलप करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना। बट आईपीसी नॉट गिव यू एनी अप्रूवल ऑफ ड्रग। अगर आपको कोई ड्रग की अप्रूवल लेनी है तो आईपीसी का उसका कोई लेना देना नहीं है। देखो आप फार्मेसी की, यस, CDCSCO क्या है? CDCSCO सेंटर ड्रग सुपरविजन एंड कंट्रोल। यस, सो CDCSO इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया जिसको आप फाइल करोगे। ठीक है, और यूएसए में करना हो तो सर FDA। हाँ, देखो यूएसए का आपको पता है, USFDA है। इंडिया का आपको पता नहीं है, हैं? अच्छा, TGA कहाँ का है रेगुलेटरी बॉडी? TGA थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है? इंडिया की हैं? कहाँ की? हाँ, थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, TGA, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देन देयर इज यूरोपियन कमीशंस। ठीक है, देन देयर इज हेल्थ कनाडा। हेल्थ कनाडा है कनाडा के लिए, तो वहां की जो रेगुलेटरी बॉडी उसका नाम है हेल्थ कनाडा। ठीक है, TGA, हेल्थ कनाडा। ठीक है, देन देयर इज आर, हाँ बोलो, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ROW होता है। ठीक है, तो ये बाकी की जो अदर कंट्री, हर एक कंट्री की नहीं है रेगुलेटरी बॉडीज। आप अगर बांग्लादेश में जाओगे तो आपको वहां पे कोई इतनी एस्ट्रिंग इतनी बॉडीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, देयर आर, बट यू कैन से दे आर नॉट दैट मच एस्ट्रिंजेंट कि आपको बहुत ज्यादा उनको डोजियर देना है। डोजियर मतलब जिसमें आप डेटा भर के दोगे, जो भी आपके ड्रग का डेटा है या मेडिकल डिवाइस, वट एवर यू आर गोइंग टू launch in that particular country. So cytotoxicity is been बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मैं आपको यहाँ बता रहा था, सिर्फ क्वांटिटेटिव पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो है दैट हेल्प अस टू टेक सर्टेन डिसीजंस, और वो डिसीजंस जब हम रेगुलेटरी बॉडीज में सबमिट करते हैं तो उन्हीं बेसिस पे वो भी डिसीजन लेते हैं। तो we as a inventor, we as a innovator also take a decision, and the regulatory body also। वो हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास कुछ डेटा होगा, कुछ क्वांटिटेटिव डेटा होगा। ठीक है, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चल जाएगा कि यस हमारी ड्रग टॉक्सिक है, नहीं है टॉक्सिक। अगर है तो कितनी है, नहीं है तो कितनी नहीं है। समझ रहे हो? मैंने कहा एवरी ड्रग इज टॉक्सिक, एवरी, तो किस अमाउंट तक नहीं है वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, इसकी सेफ कंसंट्रेशन कितनी है। So there are qualitative cytotoxic tests, and which is three tests we do usually: extraction method, MEM elution बोलते हैं, Agar, diffusion और Aggros overlay assay, and direct contact method. So these test toxicity is verified over a period of exposure, typically 24 to 74 hours of the cell to the extract or device. So MEM elution test for extracts. So the test material is extracted for 24 hours in minimum essential medium. MEM एक हमारे पास medium होता है, ठीक है ना? Then extract is prepared from the test material, which is then placed over the culture cells.
That culture cells are L929 mouse fibroblast cells होती हैं ये. And the following incubation, the cells are examined microscopically for morphological changes, degeneration, and lysis of the cells. Potentially cytotoxic substances are uniformly distributed throughout the cell culture. ठीक है. So जो potentially cytotoxic substances that are uniformly distributed throughout the cell culture, उसको हम cell culture में ऐसे distribute कर देते हैं और उसको मतलब डाल देते हैं सेल कल्चर के अंदर. तो ये दो फिगर्स आपको दिख रही है ना. सो ए कॉन्फिडेंट मोनोलेयर और ये हाई मैग्निफिकेशन इमेजेस हैं. ये एक सेल लाइन है पर्टिकुलर मोनोलेयर सेल कल्चर की, और यहाँ पर आप देख रहे हो लाइसिस हुआ हुआ है, स्पेस बहुत ज्यादा है, सेल टूट गई हैं, सेल ब्रेक हो गई हैं. ठीक है ना. तो दिस इज व्हाट. तो इट मींस ये नॉर्मल हो सकता है, या अगर हम कंपाउंड डालेंगे इसमें तो वो इसी तरीके से रहना चाहिए अगर वो टॉक्सिक नहीं है. अगर वो इस तरीके से शो करता है तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है, एक्सटेंसिव सेल लाइसिस अकर व्हिच मे लीड टू which may reflect the toxicity of the compound, or the compound is toxic. Now we do this Agar diffusion or Aggros overlay assay, and in this method a thin layer of nutrient supplemented agar is placed over a culture cell, that is L929 mouse fibroblast cells, and the test material or extract of the test material dried on filter paper and placed top of agar layer, and cells are incubated for 24 hours. So cytotoxic leachates diffuse into the cell layer via the agar, and a zone of malformed, degenerative or licensed cells under the around test material indicate the cytotoxicity. ठीक है. And we also use this MRC5 human embryonic lung cells. So अगर overlay positive control, ये दिखाया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, इस तरीके से हम रखते हैं. तो ये अगर है आपका, ठीक है ना, और ये आपका एक्सट्रैक्ट करा हुआ सेल लाइन्स है यहाँ पर रखी हुई, और इसको टेस्ट हमने अपना कंपाउंड डाला है. तो जितना ज़्यादा वो लीच कर जाएगा और यहाँ पे उतना बड़ा जोन बनेगा. ठीक है. और वहाँ पे सारी की सारी डेड सेल्स होंगी, क्योंकि वो डेड सेल्स वहाँ से हटा देगा. इस तरीके से हम लोग करते हैं. नाउ देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एसे, और इसको हम लोग ISO 10993-5 ऐसे भी बोलते हैं. So in this method, a piece of test material is placed directly onto a cell growing on culture media. ठीक है. यहाँ पे मान लीजिए कि सेल ग्रो हो रही है कल्चर मीडिया में, आपने डायरेक्टली a piece of test material is directly placed. ठीक है. Without the agar layer. So cell culture are grown to a standard monolayer. And cells are then incubated for 24 hours at 37 degrees centigrade. Cells are incubated, ठीक है, for 24 hours के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड के सेल्स को इंक्यूबेट किया जाता है. During incubation, leachable chemical in the test material can diffuse into the culture media and contact the cell layer, and subsequently the monolayer are examined microscopically for the presence of morphological changes, reduction in cell density of lysis of cells and around the test material. ठीक है. सो हम इस तरीके से ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड यूज करते हैं, जहाँ पर आपने क्या एक प्लेट में सेल्स लेनी है और उस सेल्स को आपने क्या करना है, इसमें कल्चर मीडिया भी रहेगा, आपने उसको इंक्यूबेट करना है विद दिस टेस्ट मटेरियल, एंड वी डू दिस इंक्यूबेशन फॉर 24 आवर्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारे पास BOD होते हैं, BOD इंक्यूबेटर्स होते हैं, एंड यूजुअली जब भी हम कभी सेल लाइंस को इंक्यूबेट कर जाए तो हमें CO2 इंक्यूबेटर चाहिए होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर आते हैं दैट आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो मेंटेन रहता है. जब भी सेल ग्रोथ होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द सेल लाइसिस एंड सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन. ठीक है. सो वहाँ पे वी हैव टू कंट्रोल. अब एनवायरनमेंट में तो फ्री आपकी है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे तो कंट्रोल नहीं है, बट दैट इंक्यूबेटर हैव अ कंट्रोल ऑन द CO2. सो वहाँ पर ऑक्सीजन CO2 का एक लेवल मेंटेन रहता है, जो कि बिल्कुल जितना होता है जैसे कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल ग्रो कर रही है, सेल कल्चर हो रही है, उसी तरह का वो एनवायरनमेंट मेंटेन करता है. So now coming to the quantitative cytotoxic assay. So these are the qualitative cytotoxic assay. Now we are coming to the quantitative cytotoxic assay. PPTs दिख रही है ना आपको चेंज होते हुए? Yes, sir. Okay.
सो क्वांटिटेटिव में क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ सेल नंबर एंड वायबिलिटी बाय मेजरिंग ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ओके, सो हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं, सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, क्योंकि आप किसी भी सेल का फंक्शनिंग आप बताओगे कि उसमें मेटाबॉलिज्म है ना, अगर मेटाबॉलिज्म है और प्रॉपर मेटाबॉलिज्म है तो उसका मतलब सेल आपका फंक्शनिंग है। और इसी तरीके से उसमें क्या है, आपकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ठीक है, so there are different methods, assays method for determining of this you can say the quantitative cytotoxic assays or quantitative cytotoxic methods. These are MTT assay, ठीक है, MTT assay है, then there is neutral red assay है, calcine assay है, and LDH. Okay, these are the four important cytotoxic assays method available, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो क्वांटिटेटिव साइटोटॉक्सिसिटी है उसकी हम असेसमेंट करते हैं। एंड दीज आर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड्स। और जितनी भी ड्रग कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, केमिकल कंपनीज हैं, जहाँ पे कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं आपका क्या कहते हैं टॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए या इस तरीके से आपका, तो वही सारे मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनको करने का बहुत स्पेसिफिक मेथड होता है, प्रोसीजर होता है, वो मैं आपके साथ जब भी नेक्स्ट क्लास है उसमें सारा डिस्कस करूंगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन पूछना है आपने, अभी तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके, तो आज Yes, मैंने sir. आपको, हाँ ओके, सो आज मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है वो थोड़ा सा बताया है कि व्हाट इज इन विट्रो साइटोटॉक्सिक एसेस क्या होते हैं, इन विट्रो साइटोटॉक्सिक मेथड्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, इन विट्रो सेल कल्चर मेथड या इन विट्रो सेल टॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिक, सेल टॉक्सिसिटी, दीज आर द कॉमन टर्म्स, कॉमन सिमिलर वर्ड्स हैं। तो वो हम क्यों करते हैं, उनकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवर इन विट्रो मेथड और सॉरी इन वीवो मेथड और एनिमल मेथड्स। चार पांच मैंने आपको इसके एडवांटेज बताए, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ डूइंग दिस इन विट्रो cytotoxicity studies or cytotoxic assays. Then I have talked about various cell lines, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, सॉरी एंड पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो सेल मॉर्फोलॉजी, सेल वायबिलिटी, सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिक पैरामीटर। Then I have talked about the various cell lines, neurotoxicity अगर lung toxicity है, retroendothelial system में है, hepatotoxicity है, तो ह्यूमनोइड्स वो होगी आपकी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसे बहुत सारी सेल लाइन्स है हमारे पास। ठीक है, ये तो जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए। ठीक है ना, नाउ व्हाट आर द एंड पॉइंट फॉर द स्पेशलाइज्ड सेल्स, उनके क्या क्या एंड पॉइंट्स होते हैं आपके। ठीक है ना, और कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनसे हम चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से नाउ हाउ वी डू दी टेस्टिंग, साइटोटॉक्सिसिटी टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। व्हाट इज क्वालिटेटिव मेथड, देयर आर थ्री क्वालिटेटिव मेथड, MEM elution जिसको हम लोग टेस्ट ऑन एक्सट्रैक्ट्स, देन देयर इज अगर डिफ्यूजन और एग्रॉस ओवरले ऐसे मेथड, एंड देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऐसे जिसमें हम सीधा मटेरियल को प्लेस कर देते हैं सेल कल्चर के अंदर। And now there is quantitative cytotoxic assay, and usually we do the cell number viability of measuring this metabolic activity or membrane permeability. And these are four quantitative cytotoxic assay. There are other also, but these four are very commonly, primarily, and necessarily used to check the cytotoxicity. ठीक है, और बहुत सारे हैं, बट ये चार आपको करने ही है, ये करना बहुत जरूरी है। अगर ये चार आपने रिसर्च से नहीं किए तो आपका वो डेटा माना ही नहीं जाएगा, भले ही आप और कितने कर लो। तो दीज आर द MTT ऐसे है, न्यूट्रल रेड ऐसे है, कैल्सीन ऐसे है, और LDH ऐसे। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, ये सारे मेथड कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? So class tomorrow. एक मिनट है बेटा, वो मैं एक बार आपके सर से पूछूंगा, वो जब भी होगा, अगर कल होती है कल,
whenever they will give me the schedule accordingly. But the time would be, I think, this 3:30 to सर 4:30. कंटिन्यू बोलो पल्लवी. सर कल रहेगा तो कंटिन्यू और मेरे को आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही. हेलो हेलो. सर अगर अलग आगे स्लाइड सर आगे का अगर आप कल कवर कर लेंगे ना सर तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि हम लोगों को कंटिन्यूएशन में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो आप एक बार सर को बोल देना, है ना, प्रकाश सर को बोल देना, मैं भी कर दूंगा, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं. आई कैन डू टुमारो कंटिन्यूएशन में. ठीक है, सर फ्री होंगे, सर फ्री होंगे ना सर? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ओके सर, थैंक यू सर. सर फ्री होंगे ना सर टुमारो? सर हाँ. टुमारो फ्री होंगे ना? हाँ, मैं फ्री हूँ, मेरा कोई शेड्यूल नहीं है 3:30 to 4:30. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. एंड आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद ऑल ऑफ यू. आप एक काम कर दीजिएगा, मैं अपनी ईमेल दे रहा हूँ, आप मेरी इस ईमेल पे मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ. यहाँ पे टाइप करने का होता है कुछ मैसेज? यस सर, उधर है सर, कॉल मैसेज. ओके, सो दिस इज माय ईमेल आईडी. व्हाट यू विल डू, आप मुझे अपनी ईमेल से इस पे भेज देना. मेरे को अपना क्या कहते हैं, अपनी अपनी ईमेल भेजे ना, तो मैं आप सबको एक साथ ये नोट्स भेज दूंगा. ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? यस सर. ओके, गुड. ये तो फोटो खींच लो इसकी, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, जो भी है. तो आपसे फिर हम लोग मिलते हैं कल, है ना, एक बार चेक करते हैं. और नाउ आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर.